Welcome back to Game On Hey, and we are looking, of course, ahead to the final today. The final between New Zealand and Australia in Dubai, live on air here at 7 o'clock this evening. But that just gives us a little time to look at the players, look at what's been going on so far in the tournament. Sorry, excuse me, see who's likely to get the job done today. And the first thing to do, I guess, is to look at the main potential batsmen, the top threes of both sides. Of course, and the first one we have lined up is David Warner from Australia. अगर हम देखें डेविड वार्नर ने ऊपर से काफ़ी अच्छे स्टार्ट्स दिए हैं इस टूर्नामेंट में और ये वो स्टार्ट था जो हमें इतना अच्छा नहीं लगा पर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा अच्छा लगा होगा राशिद नहीं बहुत जो इमाद वसीम के ऊपर इनका स्ट्राइक रेट 180 का है ये मालूम था हमारे वीडियो एनालिस्ट को लेकिन मैचअप कर नहीं पाए उनके साथ खैर नहीं अब बातें रह गई हैं लेकिन ये शॉट नहीं मारनी चाहिए थी क्यों नहीं मारनी चाहिए थी नहीं गलत है स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं छोड़ दे ये शॉट बहुत अच्छी जो मारी है असल में पहले ये बॉल डेड बॉल हो जाता था अब क्योंकि नो बॉल है तो इसलिए वो मारते हैं कभी भी नहीं हुआ अभी बीच 2 साल पहले ये नो बॉल काफी वीडियोस आई हैं सब में चौके मारे गए छक्के मारे गए आमिर सोहेल वही थे जिन्होंने बॉल को छोड़ दिया था 93-94 में हम लोग गए थे न्यूजीलैंड में डैनी मॉरिसन ने बॉल की थी और फिर उन्होंने छोड़ दी थी अदरवाइज ऑस्ट्रेलियन जो भी मिला सब मारी है और वो भी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो कभी भी नहीं छोड़ा अनबिलीवेबल कि इतना सा बॉल ऊंचा था और उसके बॉल के नीचे गए और फिर छक्का मारा अनबिलीवेबल शॉट मेरा ख्याल है कि ये जब सब कॉन्टिनेंट में है तो इस तरह की बॉलिंग खेल के आनी चाहिए हो जाती है ऐसी मिस्टेक हो गई ना ये तो बॉल की नहीं उससे मेरे ख्याल से गौतम गंभीर ने भी काफी डेड होना चाहिए ये बॉल डेड बॉल होनी चाहिए 2 साल पहले तक डेड बॉल का ही इसके ऊपर रूल था अभी 2 साल पहले इसको चेंज किया 2018 में ये नो बॉल का रूल आया इसका इट शुड बी डेड बॉल लेकिन इनिंग अच्छी खेली डेविड वार्नर ने जो बात हो रही थी ना बहुत ही क्लासिक इनिंग खेली है और फिंच क्योंकि चल नहीं पा रहे हैं लेकिन ये ऐसे प्लेयर हैं दोनों में से कोई भी एक 10 ओवर्स भी खेलता है 8 ओवर्स भी खेलता है तो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में चला जाता है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के फेवर से ऑफ कोर्स when even if David Warner or Aaron Finch who has not been scoring they can be there for 10 overs they take the match away from the opposition that's the quality Well, his 49 against Pakistan came in 30 balls. And if he does anything like that again today against New Zealand, that's a good start. I got the gist you were talking about the multi-bouncing Mohammad Hafiz mystery ball. mystery ball The mystery ball from Mohammad Hafiz. And the debate, I thought that I didn't realise there was a debate about this until this morning. yeah Twitter, it's all over social media. That, should he have done it? Should he have hit it? Should he have left it? Oh, it's a freebie. Just go for it. It is. To be fair, it bunks well enough for him to hit it for 6. For 6. So if it rolls along the ground, I guess there's call for you to call dead ball or whatever. But he maximized. Hassi didn't get it right. Warner got it. Sorry, Hassi didn't get it right. And David, he capitalized on... He's got more names than you, this guy. Did it, for some reason. It was an opportunity for him to score. And he did. In order for him to get on it, it was a legal ball. Here was, I think, we'd come here today to have a sort of serious conversation-ish about David Warner's talents with everything else. And of course, social media has rather hijacked the story. But anyway, if he plays well, that gets him off to a great start. Yeah, I mean, look, he's a key player. Australia looking all the time, Warner, when Warner on song, there is always a chance for the team to have a big total. Whoever's batting first, I think they're going to target something like over 180. And in that case, Warner has to come good. Aaron Finch and Warner, I think probably one of the best openers, complement each other. And Warner, when Warner's going in his way, it's hard to stop him. And whoever is the captain, I think Rashid mentioned matchups. Don't give a left-arm ballers to we only saw one over from Santner the other day, so I think he'll be bowling less in this match. By all means, Bolt, for instance, could do damage to both Warner and Finch. Finch has had, he's honest. He says, I have a lot of problem with someone left arm swinging the ball into me. And Warner, that first couple of balls outside off stump, anything can happen. So if you have, say, a Trent Bolt over right at the start, and that goes well for New Zealand, our team, Rashid, our team, then that can obviously affect the start of the game too. Might as well talk about Aaron Finch then, who's
he's not been as explosive as David Warner in this tournament, but he's filled in the gap at times. The basic stats look a little bit like this. So 97 runs, strike rate overall. Strike rate 1 to 6 is good. Overall 120. Yeah, it's kind of okay. On spinner, Spinners only he's- 77 strike rate. Struggle And against 28 boundaries ratio on spinners. डिफिकल्ट है इनके लिए थोड़ा सा, लेकिन ये अभी तक हम ना इसमें डेविड वार्नर को सॉरी एरन फिंच को उस तरह देखा नहीं जिस तरह वो खेलते हैं। अब फ्रंट में काफ़ी पावरफुल प्लेयर हैं, मतलब अर्ली ऑन जो है ना अंदर आते हुए गेंद पे थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर थोड़ी सी विथ उनको मिले, अगर वाइड आप जाएं तो वो काफ़ी डेंजरस प्लेयर हैं। और उनका जो रिकॉर्ड है, मैं तो साथ में खेला भी हूँ, मैंने इनिंग्स भी देखी है उनकी, तो क्वालिटी जो है ना वो डाउन द ग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो लेंथ पिक करके जो ये मिड विकेट पे बाउंड्री लगाते हैं 4 या 6 जो है ना, वो इनकी क्वालिटी है। आई थिंक इनके जो वीक वो नज़र आ रही है ना कि इसके मिडिल ओवर में जो ना वो ज़्यादा थोड़ा सा वो स्ट्रगल करता है स्पिनर्स पे। तो जिस तरह हमने अगेंस्ट पाकिस्तान मैच में जो बात की थी कि स्ट्रगल कर सकता है और वो स्पिनर ने आउट किया, ऑब्वियसली हर टीम के वो होता है, उनके पास एनालिस्ट होता है और अपोजिशन पे काम करते हैं। तो मैं भी कि इसको दोबारा वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल हो, क्योंकि उनके पास 2 अच्छे स्पिनर्स हैं। ऑल दो अगर आप देखें सेंटनर ने पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक अपना कोटा के जो ओवर है वो पूरे नहीं किए, लेकिन मैं भी कि आज वो करे क्योंकि प्रेशर मैच है। और जो दुबई की पिचेस है, जिस तरह लास्ट जो पिच था, आई थिंक जब स्टार्ट हो रहा था तो वो पिच लग रहा था कि बैटिंग के लिए अच्छा है, लेकिन इस पे पास्ट में हम खेले और हमने जो आकिब भाई उस टाइम पे बात कर रहे थे ना कि 150 पार स्कोर है यहाँ पे एवरेज स्कोर है, तो वो बिल्कुल एवरेज स्कोर है, लेकिन जो 20 रन हो गया था आई थिंक वो पार स्कोर था, क्योंकि पास्ट में जो इस तरह के पिचेस पे हम खेले तो यहाँ पे हमेशा से जो ना बॉल ग्रिप करता था और हमने 150-160 में काफ़ी मैचेस जीते। वो डिपेंड करता है आपकी बॉलिंग पे, क्योंकि स्पिनर का बड़ा अहम रोल है मिडिल में। जिस तरह शादाब ने बॉल की, लेकिन उसके साथ सऊदी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन साथ में कोई दूसरा स्पिनर ऐसा नहीं था कि जो एक आध विकेट ले सकता, क्योंकि पास में अगर आप देखें ना हमारे पास जो शाहिद भाई जिस तरह के कर रहे थे, हमने इवन ऑस्ट्रेलिया को 150-60 में मैचेस जीते और शाहिद भाई होते थे, साथ में सईद अजमल। और वही एंड पे फास्ट बॉलर का गेम आ जाता है, लेकिन जो आकिब भाई ने एक बात मेंशन की कि प्रेडिक्टेबल नहीं होना पड़ता आपको, जो ना जब आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हो ना तो आपको हिट लग जाती है। मेरे ख्याल से जो लास्ट के ओवर्स है वो फास्ट बॉलर को बहुत काम करना पड़ेगा, आपको बैट्समैन के साथ जो ना ब्लफ खेलना होगा, फील्ड लेके ना आप उनके साथ एक बॉल के लिए एक फील्डर नहीं ले सकते, आप डिफरेंट फील्डर को आप यूज कर सकते, तभी आप कामयाब हो सकते हो। बिल्कुल यही स्ट्रैटेजीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैचेस एंड के ही ओवर्स में दूसरी ऑपोजिशन की तरफ जा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स विद एरन फिंच एंड डेविड वार्नर, दे नॉट ओनली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर व्हेन वी सी देम बैट टुगेदर, it's also so difficult for a captain if you are Kane Williamson, that now David Warner is really good against the left arm spin, but Aaron Finch has a problem with spinners at the moment, what we have seen. So it's really difficult whether to bowl the spinner or the fast bowler with all these matchups now. If you put your thinking cap on. Well, I reckon, as I said, if you have, in fact, Bolt and Southey, Bolt with that swing the left armers might get, Southey with the angle across the left-hander. I mean, I think they could both do damage early on if they get it right. But this is the fun that captains have, and the analyst. I mean, nowadays it's not just a captain who has his ideas and his gut feelings, but it's it's figure after figure after figure, stat after stat, match-up after match-up, analysts getting involved. It would drive you mad. I tell you, sometimes we get carried away with all these matchups. If you're good enough to bowl to anyone, you should. You're a professional. And why should you hide because this guy, you think he's going to take me down? You're going to do it at some. He must do it at some point. And if you get the ball in the right areas, you're just as good a bowler as anyone. Yeah. Okay, let's move on to Mitch Marsh, the next man in the Australian lineup, who's one of those guys who actually seems to get the job done more often than not, but comes in under the radar a little bit. So you think, look at the Australian team and think, well, I know about Warner and Finch. What about Marsh? Actually, he does a pretty good job with it. Yeah, most improved player, still underrated, not that famous numbers and a big name, but look at his strike rate, 180 against pace.
And the other day, with the shot he played on to Hassan Ali, that wasn't a bad ball, but it picked up and he can hit miles. Again, the spin is the problem for seem to everyone, but the problem is when at the top when Warner and Finch is batting, you can't bring your left armer. So I think nowadays we need a lot more Livingston style of bowlers who can bowl leggies and offies. So I think this is what future bowlers will do, and you have to come up with better strategy and better skilled bowlers. He's a big, strong boy. Strong boy. And I know for sure that he's highly rated in the Australian camp. And this is why I think he's been given all these opportunities. Because you can call him in as well to come and throw a few down, especially in certain situations. Yeah, it gives them a give them a lot of options. all-round. And there is only one more point. The Australian batters, if you look at their grounds, they're huge. So when they come to Mickey Mouse boundaries, That's right, they are more confident than the other batters, because if they can hit, they can clear the rope. It's easier for them. They're always more confidence than other players who are playing the Mickey Mouse boundaries. What was important, even though they were losing wickets against the last match, Pakistan, they just kept on going. They had looked to me from our vantage point that they had this huge belief that regardless of whatever, we are going hard. And in the end, they got the job done. His strike rates were better actually overall than Finch anyway, both pace and spin. So, and his results actually have been pretty good at number 3. So he's a key man. Right, shall we move on to the New Zealanders? Yes, please. I think we can start with Daryl Mitchell, who was the player of the match for that semi-final. बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी इनिंग्स रही है, जिस नंबर पे आए ओपन का चांस मिला इनको, और अगर इनका स्ट्राइक रेट देखें, चाहे कोई भी फेज ऑफ द गेम हो, बहुत ही हेल्दी स्ट्राइक रेट है तीनों फेजेस में, और पेस पे बहुत ही अच्छा है 159 का, और स्पिन पे भी रिस्पेक्टेबल स्ट्राइक रेट है जिस नई बॉल से ये बैटिंग करते हैं. ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त राशिद भाई ये इनके लिए न्यूजीलैंड के लिए जो स्ट्राइक रेट उन्होंने चेंज किया है लास्ट 16 to 20 ओवर्स अगेंस्ट इंग्लैंड, वो बैटिंग थी उनकी 245 स्ट्राइक रेट था, जहाँ पे गेम का मोमेंटम शिफ्ट किया टूवर्ड्स न्यूजीलैंड की टीम. स्टडी प्लेयर हैं और हाइट ज़्यादा है, बैलेंस बहुत अच्छा है, बैक फुट पे पंच कर रहे हैं, पीछे मारने की कोशिश की है, बहुत ज़बरदस्त है, फ्लो बैक का बहुत अच्छा है. और सेकंड मतलब विलियमसन टाइप के प्लेयर हैं ये भी, जो कि गेम को रीड करके लेके चलते हैं, और गोल्फ जो शॉट्स मारते हैं ये इनके लिए कमाल है. और आज तो इनका रोल और भी मुश्किल हो जाएगा, इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि कॉन्वे भी नहीं है. देखते हैं सैफर्ड अगर आ रहे हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो नहीं खेल पा रहे थे, विकेट कीपिंग के इश्यूज थे, तो वो भी अच्छे प्लेयर हैं. लेकिन ये जो मिचेल है ये काफ़ी अच्छा इजाफा है न्यूजीलैंड के कैंप में, क्योंकि ये पहली दफ़ा ओपन कर रहे हैं. हालांकि मनरो एक ऐसे प्लेयर थे तमाम फ्रेंचाइज में खेलते हैं, उनको रिप्लेस किया है उन्होंने, और उन्होंने प्रूव किया है कि बेटर देन मतलब किसी भी प्लेयर से बेहतर हो सकते हैं. बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं. और हम साथ ही अगर नज़र डालें मार्टिन गप्टिल के ऊपर भी, क्योंकि मार्टिन गप्टिल अजहर भाई ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका है, और उनका भी रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा इस फाइनल के अंदर, क्योंकि हमने देखा पिछला जो फाइनल था उसमें जितना वो अच्छा करना चाहते थे नहीं कर पाए, और अगर इनका भी स्ट्राइक रेट देखें तो काफ़ी रीजनेबल अच्छा हेल्दी स्ट्राइक रेट है तीनों फेजेस ऑफ द गेम पे, और पेस और स्पिन दोनों को बड़ा अच्छा खेल रहे हैं. देखिए मार्टिन गुप्टिल की जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, वो न्यूजीलैंड के लिए पिछले तकरीबन 10 साल से जो है ना वो बहुत आला परफॉर्म कर रहे हैं. वो किसी लेवल पे भी हो, टेस्ट लेवल पे हो या शॉर्ट फॉर्मेट हो या ओडीआई क्रिकेट हो, अभी पिछले रिसेंटली वो रन्स नहीं कर रहे थे. अभी एक इनिंग्स उन्होंने 90 रन्स की जो इनिंग्स खेली, उनसे डेफिनेटली उनको कॉन्फिडेंस होगा, और आज के मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो है ना अपनी फॉर्म को जो है यूटिलाइज करें और आज स्कोर करें. क्योंकि अगर हम दोनों ओपनर्स की बात करते हैं ना, डैरल मिचेल की और इनकी, तो ये आगे वाले बॉल पे इनको थोड़ा सा फंसते हैं, चाहे बॉल अंदर आ रहा हो या बाहर आ रहा हो. जब मार्टिन गुप्टिल का ये है कि वो लेग साइड पे रहते हैं, अपने आप को थोड़ा रूम देते हैं, अगर बॉल आगे पिच होता है तो ऊपर से खेलते हैं, अदरवाइज वो कट पे ज़्यादा
रिलाई करते हैं और शॉर्ट बॉल तो वो अच्छा खेलते ही खेलते हैं। तो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए। और जब हम बात कर रहे थे ना पिचेस की, मैचअप्स की बात कर रहे थे, तो आई थिंक दुबई का पिच है, अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं ना तो आपको 6 ओवर के बाद डेफिनेटली स्पिनर्स के लिए मुश्किल हो जाता है जब ओनली 2 फील्डर जब बाहर होते हैं। हमने बात की कि सेटनर ने अभी तक जो है ना वो पूरे ओवर नहीं किए, तो ही इज़ गुड इनफ बॉलर टू बॉल इन एनी सिचुएशन। लेकिन ये है कि यहाँ का पिच पे बॉल फंसता है तो वो हैंडी हो सकता है इवन डेविड वार्नर के खिलाफ। वार्नर का रिकॉर्ड अच्छा है इमाद वसीम के अगेंस्ट, लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप उनको आईपीएल वगैरह में भी देखें तो स्पिनर से काफ़ी दफ़ा आउट भी हुए हैं, तो वो आप उनका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनको उसका फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल। और एक और भी बैटर है इनके, केन विलियमसन, ऑफ कोर्स कप्तान है, सबसे आला बैटिंग कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत ज़्यादा T20 की बैटिंग अगर नहीं हम कहें कि, लेकिन जो स्ट्राइक रोटेशन है, जो पार्टनरशिप्स बनाते हैं, उसकी वजह से बहुत ही एक की मेंबर है। इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है जो तेज बहुत ज़्यादा खेल सकें, पर जो इनकी पार्टनरशिप्स का रेशो है, जिस तरह ये टीम को लेके चलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उमर भाई, ये की मेंबर किसी भी टीम के हो सकते हैं। बिल्कुल। और आज तो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हमेशा से उसने टीम को लीड किया, लेकिन कॉनवे के ना होने से मेरे ख्याल से उसको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि ऊपर से अगर आप देखें तो गप्टिल और मिचेल ऐसे प्लेयर हैं ना कि वो उनके अगर स्ट्राइक रेट काफ़ी हाई है, इसको लेके जाना होगा। मेरे ख्याल से टॉप 3 के जो भी बैट्समैन सेट हो जाए, स्पेशली विलियमसन, इसके सराउंडिंग में सारे प्लेयर खेलते हैं, तो ये अगर अपनी टीम को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, अगर अच्छा फाउंडेशन देते हैं, तो एंड में इनके पास ऐसे प्लेयर है जिस तरह वो नीशम हो गए या जो दूसरा फिलिप्स है, तो वो ऐसे है ना कि वो अच्छी स्ट्राइक के साथ खेल सकते हैं। मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से लेता भी, और आज एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसमें देखिए विलियमसन का ये है कि ये अलाउ करते हैं अपने इर्द गिर्द के प्लेयर को कि वो अपने फ्रीली खेल सकें। अगर डैरन खेल रहे हैं साथ में, या कन्वॉय खेल रहे हैं, या नीशम खेल रहे हैं, तो उनको पता है कि एक एंड हमारा सेफ है कि विलियमसन खेल रहा है। एज ए लीडर, एज ए कैप्टन, न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में नंबर 1, ओडीआई नंबर 1, नंबर 4 T20। अब ये वर्ल्ड जीतने के बाद ये थोड़ा सा और ऊपर क्लाइम करेंगे। वेल, जिता दिया अपने मैच अपनी टीम को। देखें इनका अगर आप स्ट्राइक रेट देखें ना यहाँ पे, तो थोड़ा आपको कम नज़र आ रहा होगा अपेरेंटली जो वैसे जो नॉर्मली खेलते हैं, क्योंकि इसमें जो स्कोर्स हुए हैं वो 140 150 के, तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी कि अपना स्ट्राइक रेट ऊपर लेके जाएं। अगर हम देखते हैं जब बाहर के मुल्कों में जब खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में खेलते हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट टोटली डिफरेंट होता है। तो उनको पता है कि किस टाइम पे किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। अगर उनको स्ट्राइक रेट ऊपर लेके जाना है तो उनके पास सारे शॉट्स हैं, और वो हमेशा से फिनिशर रहे हैं, उनके मिडिल में आते हैं। टीम उनके गिर्द जरूर खेलती है, और उसमें अक्सर देखा होगा न्यूजीलैंड जब जीता है तो ये इनका रोल जो था वो फिनिशर वाला था। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो ऑफ कोर्स the top 3 they complement each other really well. They have a very healthy strike rate both for spin and fast bowling, and the role of Williamson, I mean, he's the anchor of the team, great leader, has led them in all 3 formats, and his role in batting is also very key because he mostly finishes the matches as well. Yeah, okay. What do you reckon, Viv? Because looking at the 3, Mitchell spectacular in that semi-final. Guptill's had 1 score out of 5, 93 from 1 score, and his total is 111. Williamson is always steady. Rely on him pretty much to give you something, and of course captaincy is very much part of his bag. It strikes me, I don't know what you think, but it strikes me that top 3 is not as vital necessarily as Australia's in many ways, because although they both have similarities, you then go down the order, and there are others who can get you out of trouble if need be. Let me tell you one slight observation with Mitchell the other day, who got them across the line, where he scored most of his runs. It was tugging the ball towards the onside. And I guess if we here in the panel can obviously see that as a way forward, and the Australians for sure, they would have noticed that. Why not let him, and I believe today, at some point tonight, when he gets his opportunity, they'll be looking for him to go a little bit more over extra cover. We could see he was just sitting back in his crease waiting. We never seen much of that. All we saw was, and I think the Australians would have observed that as well. Well, it always depends when people observe what they do to try and counter it. So if they go, for instance, I don't know, full and wide, that sort of thing would take out the leg side shots, but it opens up other shots. I mean, look, players like Williamson, Barber, Rizwan, David Malan, Kohli, Rahul, Finch,
the all top orders are number 1, 2, 3, or number top 10. You need people like this because consistency, one guy playing an anchor role, and the whole teams, they're big hitters playing around them, and that is thing working for every team. And I think he's the pillar. And sometime I would like him to open the inning because he's the best player, safest batting options. So I think if he faces more ball, there are more chances for him to score runs and even saving the wickets and five power in the end. It's that same Babar Azam argument, isn't it? Yeah. Of old, because I think Because Babar's when he has done started something as a about middle it. order, Yeah, even the franchises were not interested playing him, but at time he comes up at the open and become one of the best players in the world. Yeah. Even Rizwan, Yeah. he struggled 3-4 years, and then at the top he is, I think, as effective as anyone. 1,000 runs in 1 year. I think Baba at one point in the PSL had come and asked some questions. What do you think? People think that I'm a little slow. So I said to him, no, you're not. Because you play decent enough shots, shots that are safe, you do not take much chances. And why not continue? And as we've seen, the individual is just, it gives other individuals who are not huge hitters of the cricket ball an opportunity to believe that if you can pick the gaps and do your thing as normal, turn the strike over on a regular basis, you still have a part to play in this T20 tournament. It has its place for sure, but Babar, I'm sure, has increased his strike rates the last 12 months or so. And if you were to compare, not that it matters anymore now, Babar Azam and Kane Williamson, you'd see that Babar's strike rates are up there, Kane's are down there. So everyone has their part to play, as we all do in the studio. We have another part to play now. It's called a break, but we will be back with lots more yet. Game on Hay.